Hello guys, good evening to you. It's late night actually. बहुत ज़्यादा late night है, 11:15 बजे का show है almost. And after a long time we are back, but a fantastic day to make a video. We've got Agrim with us, and before I go ahead with the topics and talk about football, Agrim, भाई कैसे हो आप? After a long time मैं तो speaking to you. आई नो आई वाज लाइक क्वाइट बिजी यार। मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ। आपका क्या हाल है? एकदम एकदम बढ़िया, फैंटास्टिक। और फुटबॉल का सीजन खत्म होने आ रहा है, वो एक ही डिसअपॉइंटमेंट है यार, डेढ़ डेढ़ महीने का एक ब्रेक सा हो जाएगा। बट यार ऑफ कोर्स हम्म। हम ट्रांसफर टारगेट्स में बिजी रहेंगे, या तो इतना ज्यादा भी ये नहीं होगा। तो वी विल नॉट बी फार अवे फ्रॉम ट्रांसफर गॉसिप्स एंड प्लेयर जॉइनिंग डिफरेंट हम्म। टीम्स। तो यार हल्ला तो रहेगा ये डेढ़ महीने में, बट यस वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन एंड कपल ऑफ इंटरेस्टिंग या फाइनल्स टू बी टॉक्ड अबाउट। और ये एक ऐसा मोड है जहाँ पे काफी कुछ टीम्स काफी सारी ट्रॉफीज जीत रही है, कुछ टीम्स हम्म। आर गोइंग like Chelsea, they haven't had a good season, they were very poor, and they will look to end this season on a high. But yeah, overall ये सीजन अच्छा था, बहुत ही अप्स या एंड डाउन रहे। तो आगे जाने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द एफए कप, एंड उससे पहले हम हमारे डॉन प्रशांत को वेलकम करते हैं, कैमरा एडजस्ट करते हुए। प्रणाम। हाय प्रणाम। प्रशांत। प्रणाम भ्राता। अग्रिम भाई, प्रणाम एमशी जी। हाँ। अग्रिम भाई एमशे इज ऑल्सो यार, हेलो जी बोल रहे हाय हैं। अमशे। अग्रिम भाई ने यूके मेकिंग श्योर अल्बा एंड बुस्सी रिटायर हो गए टू अकोमोडेट मेसी। ही नोज मी अरे भाई वेरी अभी वेल। तो बहुत 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 टाइम बाकी है मेसी के लिए, बट यस यस यस, हम्म। आई होप आई होप मेसी रिटर्न्स टू बार्सिलोना, ऑल बार्सिलोना फैंस वांट इट। तो या या उम्मीद करता हूँ ये डील गो थ्रू हो जाए, क्योंकि बहुत बारसा फैंस को उम्मीद है उनसे। तो लेट्स सी व्हाट बारसा's ट्रांसफर सीजन हैज टू या ट्रांसफायर इनटू, बिकॉज यार बहुत सारी डिफिकल्टीज भी उनके लिए, प्लेयर ऑन हाई वेजेस, उनके रिस्ट्रिक्शंस है। अभी या हावियर टेबास क्या करेगा, नए रूल्स लाएगा, पता नहीं, नो आइडिया वी गॉट। तो विल वेट ऑन दैट, बट यस प्रशांत, वेलकम टू द शो। एंड before moving towards La Liga and Europa League. We talk about tomorrow's big game between Manchester City and Manchester United. Another chance for United to win a trophy, and the biggest thing is a chance for United to stop City winning the treble and to equal United's record of 1999, where they won the FA Cup, Premier League, and the Champions League. So they've got to या। stop doing that, and they don't have to rely on Inter Milan. They can do it themselves by defeating them tomorrow. कि देयर होप्स हाई है, और सब सारे प्लेयर्स जोश में है। दैट फैंटास्टिक स्पीच बाय टेनाग आफ्टर द एंड ऑफ द लास्ट गेम, जब क्राउड के सामने उन्होंने स्पीच दिया, ही वाज एक्सपेक्टिंग द फैंस टू कम टू द एफए कप फाइनल्स, ही वांट्स द सपोर्ट यार। तो मूड तो बना हुआ है, बट यार कोई भरोसा नहीं कैसे खेलते ऑन द डे। वी सीन some fantastic performance and we have seen some below par performance, so we don't know। तो प्रशांत, या। बिफोर आई टेक योर व्यू, अग्रिम भाई एज अ न्यूट्रल फैन, क्या लगता है आपको टुमारोज गेम? आई नो सिटी आर फेवरेट, बट डू यू गिव यूनाइटेड अ स्लाइटेस्ट ऑफ चांस? आई मीन यार, आई मीन यूनाइटेड का द फॉर्म हैज बीन ओके, पता है, सिंस द क्रिसमस ब्रेक। Christmas break, करेक्ट। they have been good, and like after like 4 5 games, उनका जो ड्रॉप हुआ था ना अगेंस्ट वेस्ट हैम एंड ये, that was like quite करेक्ट। concerning for me। मेरे को पता है क्या लग रहा है, बैकलाइन का इशू हो सकता है। बैकलाइन इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड, बिकॉज like if those guys, क्या नाम है उनका, बर्नार्डो सिल्वा और इधर what's his name, Riyad Mahrez, if गुंडोगा। they open them through the flanks, United will be like open apart badly. So I'm thinking अरे लेकिन how are they going to manage it? या बट they've got Aaron Wan Bissaka, बट वैन बिसाका कितना the गेम्स खेला है yes, the backline is a ओवरऑल? problem, but I don't think the मैंने हम्म। काफी गेम्स खेला यार, आफ्टर वर्ल्ड कप के बाद काफी गेम्स खेला, प्लेयर मोर देन डीएफ डलवाइन, लुक रियली गुड। टॉप विंग हम्म। या। विंग बैक विंगर्स के सामने वो अच्छा परफॉर्म किया। यू saying what you're saying is right, the backline is the issue, but the wing backs are not an issue. I mean, Luke Shaw and Van Bissaka have been fantastic this season. हम्म। The man that United will miss the most is Licha Martinez. The या partnership of Varane and Martinez has been flourishing, and या after the injury of Martinez, hasn't looked that good. But yes, kudos to Victor Lindelof.
He's Yeah. come in and played really well. But again, tomorrow you're playing a completely different side. Man Yeah. City is a completely different ball game. They are not your West Ham. They're not your Chelsea. They're not your Liverpool. They are and Yeah. United. They're thrashed by Liverpool. In presence of Varane Yeah. and Martinez. So again, they have to be aware. Man City are in the form of their life, and ये हर साल का है उनका towards the end of the season जो pick करते हैं form, they go on that unbeatable, आई मीन Yeah. डिफीट ही नहीं होते उनका, तो ये Yeah. उनके लिए बहुत बड़ा चांस है ट्रेबल जीतने के लिए, सो दे विल गिव इट ऑल एंड यूनाइटेड इफ दे हैव टू विन, आई मीन चैंपियंस आर मेड आउट ऑफ दिस, अगर तुमको ट्रॉफी जीतना है तो यू कांट एक्सपेक्ट टू meet Crystal Palace or West Ham or Southampton in the final. You've got to beat Yeah. the best to win the trophy. And tomorrow is the Right. biggest test. If United pass the test with flying colors, the next season, hopes are really high. Before I Yeah. take your view on this, Prashant, let me quickly read through the comments. MC says, how Sure. is Hojuland? United literally targeting Poundland Haaland. Okay, okay. I will come back on that. After the FA Cup discussion, I will come back on that. Don Prashant, please accept my greetings. Pranam kiye Your MC ji ko. greeting, your greetings are accepted, present. चलो चलो एक्सेप्टेंस तो हो गई। प्रशांत, क्या लगता है कोई चांस है यूनाइटेड को? क्या लगता है कि कल मार्कस रैशफोर्ड गोल मारेगा? मार्शल तो आउट है, और क्या लगता है जहां गुड बाय गोल होगा बाउट वेगोस का? Well, see, first and foremost, the good thing is that we have beaten City this season. So that Yeah. is one good part. So we have something there. But uh, and please, we need to also take into consideration the fact that that Man City was not as settled as this one is. This is now the Man City which has got everything clicking, got everything going for itself. They have obviously just dismantled Real Madrid, right? So uh, a side like that, imagine the kind of confidence that they are on. So it will still be a challenge. It will be a bigger challenge now because now Haaland is more settled. I Yeah. remember the last time when we did actually defeat them, City were in a phase uh, where they were still trying to figure out how to fit Haaland into the system, and we were able to do what in the past a lot of teams have done to Pep teams, which I have also mentioned on the podcast here, that they just they let them keep their ball in their own half, but as soon as the ball would come into our own half, into the defending team's half, they would just clear it out or just take it away. So they were allowed to keep the possession as long as it was in their own half. So that is what they did in the last game. But here, for this game, I think it would not be the strategy that we can go for. I think it would be more for two reasons. One thing is because the side that Ten Hag has inherited is still mostly filled with players who were under Mourinho, Solskjaer, LVG, and Rangnick. The best way that these guys can play is to play on counter. But against City, that is the only way that they can actually succeed. Anyone who would play against them will most likely play that style of football, and that is something which the current United side does actually excel at anyway because they've been playing that for the past 4 or 5 years. So that is one advantage. The second thing would be that because if I mean it's a big if that if Casemiro does click, if he is not overrun, like a lot of the Real Madrid players in the midweek uh, Champions League match, not this midweek, but the previous one, they were overrun. The Real Madrid midfield was overrun by Man City. Yep. So maybe Casemiro, I don't think he has slowed to that extent. So hopefully, him, Bruno, maybe Savitzer, maybe they can hold City out, and accordingly they can play on the counter and possibly score. That Okay, is the okay, yeah. only way that United can win. Yeah, Yeah, I mean, good point about that counter attack. Yeah, and that's the only way to win. And Sabitzer is out of the season, so unfortunately he won't be participating. But it'll be Ericsson, you know, yeah, and then to get the best out of Ericsson, he has to make sure that he makes that crucial pass, or make that goal. I mean, goal scoring assist before the halftime. Because if you go back and look at the season, Ericsson after 60 minutes is completely waste. He can't run around. He can only play yeah, in for one half, and after 60 minutes, he literally fades away. So
So Yes. what I and a lot of people would say you get the midfield of Bruno Eriksson and Casemiro. I would like to bring in this tomorrow if we're going to sit deep and attack City on the counter. I think we play Fred instead of Eriksson. Fred has the Yeah. tenacity. He can win the ball. He's not afraid to put in a tackle, and his partnership with Casemiro is really good. Playing for the Brazilian national team, so they understand each other. Uh, And that Portuguese trio of Fernandes, Casemiro, and Fred will be interesting. Yes, Prashant, you have to say something. okay. First and foremost, it's not that would not be a Portuguese trio. Fernandez, Fred, and No, no, I mean, Casemiro. I'm saying English Portuguese speaking speaking trio. trio. Yeah. Yeah. Okay. So yeah. 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 Okay. And the other thing is that the reason I would just like to rebut you there is because if I'm not wrong, Fred is the one who was responsible, like one of the prime suspects when United lost 6-1 at the Etihad. Was he not? Just I say, mean, Uh, yeah, he was, but then if you look at that Barcelona game, where things changed the second yeah. half, it was Fred. It was Fred's tenacity, Yeah, but the that was way he against approached Barcelona. that game. Yeah. Yeah. Yeah, but Again, I would I'm. still say, with all due respect, that was Barcelona, not City. So But then that because would be Like I said, Ericsson can't run around. He gets tired. He can't play for 90 minutes. I know the if you look at the vision and the passing abilities, Ericsson is far superior than Fred. But this game calls for a player like Fred because you need player someone who runs around and someone who can defend deep and help out Casemiro. Ericsson isn't mm, not a good defensive player. He's someone who will yeah, create chances. He'll pass. He'll creative. switch Yeah, play. That's the kind of player. Yeah, he's more of a creative player. Fred is more of a defensive player. So my opinion is that we play Fred, Casemiro, and Bruno in that midfield, and you play Rashford, Weghorst, and Sancho because we don't have Martial, so you have no other option but to play Weghorst up there. So if he can run around and contribute well to his last game, nothing like it because we don't have any other chance, and I don't think it would be right to start Garnacho, a young player, and such a big stage. It may succeed, it may not. So it would be right to bring in the second half. But yes, that's my opinion. Before I go ahead, let me quickly read through the comments. Expecting a Rashford banger at the 89th minute to make 5-1 for Man City. We have beaten them 6-3, but we have also beaten them 2-1. 2-1 था right? तो Man City को हराया था थ्री हमने वन yeah, था ना? at Old टू Trafford. वन टू टू वन Yeah. था. वन टू हाँ, वन टू ओके. वन 3-1 आर्सेनल को हराया था हमने okay, Old Trafford हाँ, पे. And just realized Garnacho crying pics are going to release when City win the FA Cup tomorrow. अरे क्या फर्क पड़ता है फाइनल में तो आए हम यार तुम तो क्या नॉकआउट में हार गए वो भी Garnacho. But yes, Man City are the favorites tomorrow. There's no doubt about that. The team that they have, the super team that they have, and they understand each other so well. The style of play is brilliant. They've got a fantastic coach. They've literally dominated the Premier League. We spoke about, we overhyped the Premier League by saying, you look at Bundesliga, look at La Liga, it's just a two-horse race. And what is Premier League now? It's just Man City winning and winning and winning and winning. Liverpool just won once in the last 4 or 5 years. Otherwise, it was just Man City, Man City, Man City. So, I mean, Premier League itself has become a mockery. And the way it's going, I don't see anyone challenging Man City for the next at least 1 year. Maybe after that, Chelsea, maybe United, maybe Liverpool. But right now, I think next year as well. I think it's Man City all the way. I think Man City को still भी I think पता है कौन लिवरपूल ही challenge करेगा because of the not because of the squad depth, I don't think. but still Hmm. with the footballing philosophy what Klopp has, he managed almost last season. He almost managed to get a victory, the Premier League victory over Pep, just by 1 point. Yeah, I know. Yeah. Yeah, 1 point. I mean, just by वो one last point. में गुंडोगन ने गोल मारा था. But Yeah, I still feel that Liverpool now won't go back to that level because I, I'm not saying Klopp is a bad manager, fantastic manager. Out of Klopp and Guardiola, I like Klopp more, although he's a rival manager. But the thing is that you in this modern day football, you have to spend a lot. When you have to spend if you have to get a best player. yeah, मार्केट में देख लो जाके एक नंबर 9 कोई भी स्ट्राइकर हो 100 मिलियन से कम नहीं है बीट योर हैरी केन और बीट योर विक्टर ऑजमन और द yeah, गोंचालो रैमोस गाय all 100 मिलियन इजीली है तो तुमको प्लेयर्स खरीदना जरूरी है लिवरपूल अनलाइक लाइक यूनाइटेड सॉरी have American owners, the FSG.
they don't spend that much. They don't like to spend that much, and they spent last year on Gakpo and David Nunes, and they spent a lot of money. So again, the focus is to get a midfielder, but I don't think one midfielder will solve Liverpool's problem. They've got a lot of positions that they need to fill. A lot of tiring legs in that team that they need to replace, and it's not going to happen in one season. So again, I like Klopp. I like their style of play. I like the strategy. But again, they need spending. They need Yeah, players in the team who can, and then a lot more than Jude Bellingham or Alex McAllister. They need more midfielders. They need more yeah. defenders at this point in time. They have good attackers. Attackers बढ़िया उनके पास. But again, defenders और midfielders अच्छे चाहिए उनको. But I think मेरे को पता है क्या लग रहा है दिव्या. I Hmm. think Trent Alexander-Arnold will be like shifted to the midfield role, and what Klopp will do is go for a full back because Hmm. Trent Alexander-Arnold this season when he's playing at the midfield was really Hmm. good. Hmm. Yeah, So yeah, I I think mean, like yeah, yeah, you're right. I mean, towards the end of the season, I think Alexander Arnold played on the midfield, and it was yeah, really working well for really them helpful again. for yeah, yeah, But again, but do it for the entire season is a different thing. And let's yeah, see what Liverpool buy yeah, in the. I think Alexis McAllister is a done deal. He will come through, yeah, and yeah, that's one good signing for Liverpool. And yes, coming back to FA Cup, before we move on to the next topic, I would like to know your score and predictions, Prashad. क्या लगता है तेरे को स्कोर एंड प्रेडिक्शंस क्या होएगा? I mean, see, to be honest, like City will be winning. I mean, they are hardcore favorites, but if United do win, I think maybe it will be Hmm. something like the match going into extra time. It will be 1-1 in extra time. Sorry, 1-1 after extra time, and the match going into penalties, and then United winning that. It would be something like that. Hopefully not. I think it Hmm. would be a great game if the game did actually finish within uh, the initial 90 minutes. I think that game would be a good one. Hmm. Similar to what the last game was, the game at Old Trafford was. So I hope it is something like that, and United end up winning 2-1 again. That would be the what my heart says. But obviously, according to the mind, it's going to be City. So both the predictions I have put out. Yeah. एमशे ने तो बोल दिया है 5-1 उसका स्कोर एंड प्रेडिक्शन 5 to City 1 to Uh, United. Agreem bhai, what's your uh, prediction? I think City will go through. I think they'll do the double, and then because there's no stopping them this year. Because if if they wouldn't have signed Haaland, I think this game would have been Man United's game. But I'm not still, you know, giving what do you call City the whole Yeah. 90%. 5% I'll give United the chance to win this game. 5%. Okay. Okay. Yeah, Fair enough. Good. yeah, yeah. I think I'll just take a big risk. I'll say 2-1 to United. You know, 2-1 to United if I somehow feel that players will give their best tomorrow, and we will produce hmm, a match-winning performance somehow. Defend, and Rashford on the counter attack. yeah, That's what my heart says, and I believe to that. Though, yeah, big game, last game of the season for yeah, United. So I think it's give it all, and Chelsea yeah, still have to play in the Champions League. So yes, I think maybe I somehow feel that United will win the FA Cup tomorrow. And 2-1 to United is my prediction. So yes, let's just see what happens. And I think हमारे WhatsApp ग्रुप पे तो डिस्कशन जरूर होगा इस मैच के बाद कि किसका hmm, प्रोडिक्शन सही गया. तो hmm, देखते हैं. But yes, it's going to be a fantastic match. The atmosphere is going to be beautiful. The fans in the ground and United fans will be out there at the Wembley Stadium, the fantastic stadium that yeah, Wembley is, and I feel that it's going to be end-to-end game. There'll be a lot of chances, especially to City, but United will also get the chances. So it's all about who ends up taking those chances. City have yeah, literally got the number one striker in the world, the best striker in the world right now, along with Lewandowski. So yeah, mm, let's see. United do have a chance, and how they turn up tomorrow, it all depends on that. So moving on, guys. Yeah. I don't want to talk about Okay. this Sorry. One much, last. but bolo bhai. Sorry. One last thing. Yeah. One last thing that we can also count on is Yaya Touré's witch doctor.
he is to be mentioned. He deserves a mention. So, अरे भाई मतलब और एक है हाँ, tomorrow tomorrow Virat Kohli is in the ground. You know, Man City has invited Virat Kohli and is in the ground. अरे वाह So, वाह वाह वाह, क्या बात है. मतलब तो पनवती. यू मतलब हाँ, यस, जिसको भी विराट का रिकॉर्ड पता है, दे वुड नो. तो I'm not sure हाँ, about मतलब that. हाँ, या so we have some hope yet. Virat, hail Virat. So So let's see, ये let's मतलब see. ये इसके Yeah. तरह है ना, लाइक द ड्रेक कर्स. ड्रेक जो भी जर्सी पहनता है मतलब वो टीम हार जाता है फाइनल. हाँ हाँ, सेम बस सेम वैसे सेम ही विराट. वैसे ही हाँ हाँ, बट वो वैसे जो ही अर्जेंटीना अर्जेंटीना इंडिया में वाला ऐसा. जो पहना था उसने, बट ही वन दैट ना. हाँ हाँ, बट विराट का और अपना रणवीर सिंह, ये दोनों का मतलब सिमिलर है ऐसा केस. हम्म. रणवीर का तो मतलब वो तो हर एक जर्सी पहनता है. ही सेज ही इज एन आर्सेनल सपोर्टर. वो हर जर्सी पहनता है. विराट इज लाइक हम्म, ही डजंट सपोर्ट वन क्लब बट ही वेयर्स ऑल जर्सी जैसा. Yeah, that's true. हम्म। That's true. That's true. हम्म, That's true. रणवीर तो नकली फैन है, तो नकली है मतलब वो उसको जै- पागल हरकतें करने के लिए उसको करते मतलब हाँ लोग उसको अट्रैक्ट क्या लोग नाम इसका, देखे वो उसको। तो शेयर के साथ भी फोटो खींचा था ना, बोला था कि अरे आई हैव बीन बिग न्यू कैसल सपोर्टर. मैंने यार ये क्या आदमी है यार, हाँ, ये कभी बोलता है मैं नहीं आर्सेनल सपोर्टर हूँ. पता वो एक वो मीम निकला था जिसमें वो लोग ने बताया था कि फीफा 22 में, फीफा का जो गेम है उसमें हर हम्म. हर मतलब हर एक एक मैच में बंदा, हाँ हाँ, एक एक बंदा बंदा रहता है. हाँ, वो एक बंदा हमेशा अलग जर्सी पहनता है. तो रणवीर इज दैट गाय. मतलब लिटरली वो लोग ने उससे रणवीर का फोटो ऐसे डाल के रखा था कि हर इसमें ऐसे खड़ा रहता है. एग्जैक्टली. So that's रणवीर सिंह. That is रणवीर सिंह. Yes. So we can now actually move on to the next topic. गाइस yes, and actually I ये didn't want to discuss much अब। हाँ बोलो ना भाई। यूरोपा लीग फॉलो किया था किसने फाइनल? हाँ, नहीं भाई मैंने मैंने देखा आधा नहीं था, देखा बट था. बहुत कांड हुए हैं मैंने, बहुत मैं सुना बहुत कांड हुए हैं। मोरिनियो मोरिनियो हारने के बाद वो नीचे चला गया था बस पार्किंग पे. ही वाज वेटिंग फॉर दैट रेफरी. एंथनी टेलर। ही वांटेड टू पंच हाँ हिम. हाँ, हाँ, उसने मेडल भी मतलब फैन को इतना दे दिया. भड़क उसने गया था रखा नहीं बिकॉज ऑफ रनर्स दैट का. डिसीजन. हाँ, उसने रनर्स का या मेडल भी नहीं रखा. उसने फैन को दे दिया. उसको इतना गुस्सा आया बट हारने से. हाँ वो फेंक दिया बट उसने बट बराबर। वी ऑल नो हाउ मोरिनियो बिहेव्स ना एंड ऑफ द डे व्हेन ही इज नॉट विनिंग. हम्म। हाँ, या नहीं बट आई थिंक डिसीजन वाज वेरी पुअर। कौन मुझे सा ऐसा पेनल्टी? आई मीन मैं सुनने में आया रीटेक कि इसका बस मॉन्टियल का पेनल्टी बोल रहे हैं आई या डोंट जो नो उसको हैंडबॉल तो लगा था? बिकॉज वो हैंडबॉल तो था नहीं हैंडबॉल आई मेरे थिंक। से. हाँ अरे हैंडबॉल था वो, पोजीशन ऐसा खड़ा है यार हवा हाथ नहीं कवर नहीं में। नहीं, पास हैंड में इज था ना. नॉट क्लोज टू द बॉडी। नहीं, पास में था. हैंड इज नॉट, पास में था. नहीं भाई काफी दूर था। मैंने फोटो नहीं जैसा नहीं, देखा, पता इतना नहीं दूर नहीं मैच नहीं था. देखा मैंने, फोटो में देखा तो काफी दूर था। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ऐसा तो आई ऐसा डोंट नो, आई ऐसा मीन नॉर्मल वो. समटाइम्स पिक्चर इज वेरी मिसलीडिंग यू नो। या कभी या कभी वो वो कैसेमीरो का रेड मैंने कार्ड देखो ऐसा वो तो छुड़ा रहा था, बट ऐसा लग वैसे ही रहा था था. वो तो गला दबा रहा है उसका, तो पिक्चर्स कैन बी मिसलीडिंग, तो आई डोंट हाँ, नो बट तो या। उसका वो पेनल्टी वाला मैंने देखा था. आई हैड सीन दैट कि वो वीएआर के पास गया. ही वेंट टू वीएआर एंड ही गॉट इट रीचेक. तो उसमें पता चला कि एक पेनल्टी अपील था. इनिशियली द रेफरी गेव दैट. ही गॉट द वीएआर टू चेक इट एंड द वीएआर टर्न्ड इट ओवर. तो वो या एक मुझे पता था. उसके बाद से मैंने देखा नहीं. लाइक वो तो आफ्टर उसका सम था टाइम आई. ना, क्या नाम है, लूकास ओकाम्पोस पे जो टैकल दिया था ना, हाँ, दैट वो वाज कंपोस्ट का. ऑलरेडी यप उस. यप. हाँ, उसको क्या किया था ना उसने, ही ऑलरेडी हैड He had already kicked the cleared it. ball. Yes. Yeah, he had already Yep. cleared it. Exactly. So it So was it not a was not penalty. a Yeah. penalty. So Hmm. besides that, I don't know why Mourinho was like, whining about not getting his what do you call penalties and everything. But जो भी है, it Yeah. was very poor. मतलब कोई मतलब नहीं था यार बस पार करके. then you guys eventually lost on penalties, तो सही है. मतलब यार ये तो और बुरा है यार. What can you expect? वो भी है. You That can actually say या that. मतलब now the press is all over. मतलब English press is already all over Jose Mourinho के भाई देखो ये तो यूरोपा लीग फाइनल भी अब हार गया और अब रोमा से भी निकल जाएगा. He is he is finished as a manager. His style is outdated. Blah blah blah. So वो सब वापस चालू हो गया. I वापस personally वो I तो would have रियल liked. रियल पे. हाँ हाँ. So no, he is linked with PSG now, but the point being, I mean, I would have personally liked to see him win again simply because he represents another brand of football, like an Yeah, alternative brand, like yeah. जो अभी like it's like वो पेप वाला जो brand है, हाई गेगन प्रेसिंग ये वो
उसमें ही सब जा रहे हैं. So they which is a hyper attacking brand. एक Hmm. डिफेंसिव फुटबॉल में बैलेंस के लिए देयर हैज टू बी अ डिफेंसिव स्टाइल ऑफ प्लेइंग. We need Hmm. guys like Sean Dyche. We need guys like Sam Allardyce. And at the top level, similarly, we need Jose Mourinho to thrive Hmm. as well. So, So the मतलब Pep उस also हिसाब से like he I'm had getting to the point. Pep also Sorry. basically tweaked his like game style. Na? He couldn't do the same thing what he used to do with Bayern or Barcelona. हाँ, देखो ना ये that is true. He does tweak, yeah, that's the thing. He does tweak his game, no doubt. But he is still an attacking manager, right? Like he's not a defensive coach. So yeah yeah, we need defensive coaches as well that will maintain the balance of the game. yeah So that's true. No, sooner or later, it I will like happen. Mourinho. I like Hmm. Mourinho a lot. मुझे बहुत सही लगता है बंदा. हाँ अच्छा Yeah, manager है. मुझे like I mean, हाँ like team of उसका like his when he time at plays, it's United like was. watching. हाँ बोलो ना. हाँ Yeah, go on, Prashant. हाँ sorry. So I was saying कि watching, I like him as well in the sense that wait, watching him play, watching his teams play is kind of similar to watching the old Italian teams play, right? Like Yeah it's like watching Test cricket. तुमको पता है it's not like hyper entertaining, but you can still see the effort. yeah पता है कि like to not play, to not attack is also kind of requires an effort, right? And yep now that like all three of us, we have played football at different levels, but we also know that defending itself is it may not look entertaining, but it is just as exhilarating. So yeah. that is why it is Yeah. also an art, and it has to be. So I mean, it has to thrive as well. So that's my opinion of it. Sorry, Divya, you can continue. MC says Mourinho crying again. Hand बोलो retrieve भाई कर क्या कहें. रहा था. I don't know. Hand retrieving. I mean, it can be considered different. I have to look at the clip. To pass my Yeah judgment. but I मेरे हिसाब haven't से looked तो at the नहीं था. video. हम्म. Photos से तो मुझे मतलब ऐसा पता लगा, है. but again, pictures can be deceiving a lot. I've हाँ seen that in the because of past. videos So, क्योंकि I saw the game ना. yeah, yeah. Yeah. Again, Because इतना but yeah, I हाँ mean, at the end of the day, you cannot blame the opposition and the referee. You've got to score a yeah goal to win the game. yeah exactly. And they, Exactly. And ठीक है, you cannot. specifically in ठीक है, penalty penalty loss. decision. अगर penalty decision ruled out भी हो गया, तेरा फेवर में नहीं है. I mean, you go in and score a goal. Goal मारो यार अंदर जाके. तुम penalties में लेके गए game and you lost it. So again, Yeah you cannot goal. blame others. You Exactly. have to be. Yep. But yeah, I mean, again, पेनल्टीज में ले जाके ठीक कुछ है, मतलब ही सेविला नहीं आज. हुआ ना. पेनल्टीज में ले जाके कुछ किस मतलब ही नहीं हुआ. कुछ मतलब ही नहीं हुआ. अगेन वही तो सेविला यूरोप नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग नंबर में तो 7. आ गया है, बट हाँ नंबर 7 है, ठीक है, सब चैंपियंस लीग में आ गए नेक्स्ट ईयर, बट फिर से वो लोग यूरोप वाले जीतेंगे नेक्स्ट ईयर. वो लोग मेरे को भी वही लग रहा है. जबरदस्ती थर्ड थर्ड फिनिश करेंगे, वापस यूरोपा हाँ लीग में आएंगे, फिर से जीतेंगे भाई. हाँ वो एग्जैक्टली. वही ट्रॉफी कर का नाम यूरोपा लीग से जोड़ के सेविला लीग कर देना चाहिए भाई. रियलिटी हाँ. हाँ सबसे ज्यादा जीत गया ना. सबसे ज्यादा जीता है. सबसे हाँ ज्यादा भाई, यूएफए कप हाँ था भाई, तब से जीत रहे वो लोग. हाँ तब से जब जीत रहे. उनाई एमरे था पहले, उसके बाद और कोई एक हम्म. बंदा था, फिर अभी ये भाई उनकी तो. लोपटेगी. हाँ कौन? लोपेटेगी था. हाँ लोपेटेगी था, हाँ इसके वही. पहले लोपेटेगी था. तो अगेन हम्म. सेवी आर मास्टर ऑफ दिस टूर्नामेंट. बट यस, ऑल इन ऑल, a good trophy, I mean good final and entertaining था, जैसा अभिन भाई बोल रहा है. या Controversial था, but yes, rightly deserved, truly deserved Sevilla to win that या trophy. Now, before I go ahead with the transfers and everything, I just want to talk about two things here. One is La Liga team of the season, one is the Premier League team of the season. So, Agrim bhai, your La Liga team of the season, क्या बोलते हो? ऑफ Who is कोर्स your? बार्सिलोना. बार्सिलोना. No. I'm not saying Barcelona, of course, but आपके top, if you have to make अच्छा 11 टॉप players, 5. तो La Liga से, हाँ, ओके तो ओके ओके किसको क्या टॉप क्या टॉप बनाओगे? 11. अच्छा 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 ओके दैट वे. Yeah. तो मैंने, who is your goalkeeper, who is going to be your centre back, wing back, midfield कौन ओके है इस सीजन के तो मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे? हाँ फ्रॉम दिस 22-23 सीजन मेरे हिसाब से गोलकीपर हैज टू बी टर स्टेगन. Okay. So, yeah, Yes, because yes, yes. because He's he good. kept Yeah, he's almost been like good. 25 to 26 clean sheets this season. Hmm. And besides Hmm. that, fullbacks में I will keep Alejandro Balde, Barcelona का. Hmm. Not Hmm. being biased because his performance was like No, very good. of course. Balde have been fantastic. Yeah. Yeah, Balde. Then followed by Araujo. Araujo this season Hmm. was again phenomenal.
Mhm. and Yes, yes. followed by Militao. Militao, he Mm. had his ups and downs, but he kept Real Madrid alive in the Yeah, league. Militao was good, good, good. Yeah, good. Sure. Yes. And fourth fullback will be probably I'll keep this guy, Fran Garcia from Rayo Vallecano. Yeah. Mm. Yeah, Okay. he had a very good season. Followed by midfield में has to be Modric. Oh, I can keep Modric in that year season because he is not stayed up to that mark in the league, Mhm. but he Mhm. had some really good games. Then followed by Pedri. Pedri also had a good season, and Mhm. another player will be Valverde. Valverde Okay. had a good season. No, no, sorry. I'll change. Kamavinga. I'll change for that Kamavinga. Yes, yes. Kamavinga was like very good this season. Mhm. मतलब जितने उसने गेम्स निकाले हैं ना रियल के लिए like even for like in Champions League it was extremely crucial for Real this season. So I'm gonna put him in my on my midfield and बाकी के तीन बचे Mhm. स्ट्राइकर्स मतलब अटैकर्स विनीशियस जूनियर ऑन लेफ्ट फ्लैंक बिकॉज कितना 12 गोल्स या 13 गोल्स ऐसा कुछ उसने मारे ना ये सीजन उसने for Real, and Mhm. for striker has to be Lewandowski. Lewandowski How and many goals did he score? 23. 23. Yeah. Okay. And last right flank पे कौन रह सकता है? I'll put Dembele और Rafinha के बीच में I'll put it because both have been extremely good. Mhm. Yeah, Or yeah. I can put just Fair, like fair enough. Fair Griezmann. enough. Griezmann. Yeah, Griezmann had a this very season good season. fantastic he was. Yeah, I'll just put Griezmann. I Mm. won't put Dembele. वरना फिर बहुत ज्यादा बायस हो जाएगा. Mm. And बचा नहीं भाई फिर जो है वो for है. Premier League. प्रीमियर लीग बाद में आते हैं. Premier प्रशांत, League में your La Liga team of season. हाँ Premier Uh, League will come back later. Prashant, your team of season. yeah okay. Yeah, I think I'll agree to a lot. My team will be similar to what Green had because I've Okay. seen first and foremost. I'll admit that I've seen very limited of the La Liga this season. Mm. But जितना मैंने देखा उस हिसाब से I will have some minor changes to the team that Mm. Green put out. Mm. Goalkeeper for La Liga, right? I think Ter Stegen would be the goalie. Yes. Uh, Mm. but then uh, the defenders would be. I think I would possibly prefer Jules Koundé in CDM Mm. role, and I would have Vinicius and Benzema up front rather than Okay. Lewandowski. That would be one Mm. change to my team. Uh, yeah, Okay. I think yeah, more or less the same thing that Green put out. Apart from that, yeah, Xavier, Yeah, over to you. Agrim's team was, written more or less for team me also same. I'll keep Ter Stegen in the goalkeeper as a goalkeeper. I'll keep Balde as the left back. My centre backs will be Araujo and Militao. Right back, I'm not sure whether you know this guy from Atletico Madrid, Molina. He had a fantastic Molina season. yeah Molina also had a good Yeah, Yeah, so season it's been brilliant. yeah Nahuel Molina, fantastic yeah right back. Midfield, I think more or less my midfield will be the same. De Jong, Pedri, and Camavinga. Fantastic midfield. yeah Uh, hmm. And then you got the front three of Vinicius, Lewandowski. Yeah, right side में तो हाँ बहुत ये I'm not sure whether you guys have heard. I'll go with Griezmann, but आप लोग ने ये स्पेनियल का प्लेयर है होजेलू उसके बारे में सुना है Joselu कि पता हाँ नहीं. Joselu also had a good season yeah Brilliant, brilliant. He's been yeah fantastic this season. yeah but he's a Hozilu, main striker he's ना been good. main striker है वो हाँ, he's a main what do you call वाइड भी center forward ना राइट में भी खेलता है ना. वाइड खेलता है क्या वो I don't know हाँ, तो अच्छा होजेल very good player, Joselu. So I like that player. So, but I'll yeah keep Griezmann. Griezmann has been brilliant, Griezmann has with all those had a very good season controversies. yeah Yeah, yeah controversies जो था उसके साथ, and people thought he's almost over, and but he still came back and he's done really good, pretty good this season. So my team of season is this:
Similar to Agrim, couple of changes just in terms of having Araujo as a center back and Molina as a right back. Apart from that, हम्म, more or less same. Barcelona had a fantastic season. Defensively, तो भाई उनको कोई छू नहीं सकता है. So they have been yeah, so good, very organized. Considered the least amount of goals. ज़्यादा clean sheet से टगस्टगन के पास तो yep. बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन. So Guys, we'll go move on. guys, Yeah, I have one more question. Who do you think is the breakthrough player for La Liga this season? breakthrough player for La Liga. Hmm. मतलब like I mean Vinicius तो सबको ही पता है, like he was like really good this Hmm. हाँ season. But what do you think besides him? Like any other player that has like given you that spark? Like he was actually good this season besides And Vinicius. we could say Balde. Balde was good, and अच्छा, Araujo, people knew about Araujo is good, but then he's matured a lot this season. बहुत yeah. ज़्यादा mature हुआ है. And if he I keeps his totally injury agree. aside, Yeah, if he's yeah, able to keep himself fit, he can be one of the top defenders in the world. yeah, Very good at reading. Someone There are very few defenders, who've given Marcus Rashford run for the money. And yeah, when हम्म I saw those two games against Barcelona, yeah. Araujo was all over him. So, All over them. Yeah, to yeah match that pace of Marcus Rashford, I'm not saying Rashford is Mbappe or Vinicius, but in terms of matching pace to pace, going toe to toe with him, that's something yeah, very difficult or very few defenders are able to do. And Araujo was, brilliant. So again, Araujo, if he keeps himself fit, and he's going to be one of the top defenders in the world. And he's matured a lot this season, like I said. And again, yeah, Balde has yeah, been one of the breakthrough players this season. So kudos to Barcelona. The back, and they won the La Liga. I'm sure they yeah, will look to win the Champions League next season. It's an yeah. area where they Let's would hope. like to improve. Like to Yeah, do better compared to last season. Yes. exactly. So yeah. Yeah, yeah. So that's for me, Prashant. Before I ask you the Premier League team of the season, any breakthrough player that you feel Agreed by talking about? Well, Prashant, you can uh say. Then I'll say. sorry Hmm. yeah so again to be very honest, I have not seen enough of La Liga to this season to tell you about a breakthrough player, so I wouldn't really have an answer to that. No Yeah. problem. No problem. You Yes, know Agreed my by. Go answer. on. My answer. Guess. Yeah. चलो guess कर लो. Who is my breakthrough player? Balde. Breakthrough player. नहीं भाई नहीं. I mm, think Rafinha. ना बार्सिलोना player है. I'll give you that hint. Barcelona. बार्सिलोना का प्लेयर है. हाँ तो बार्सा प्लेयर हाँ है. हाँ. डेम्बेले. Araujo. Guess. One last डेम्बेले chance. ना. चलो. नहीं. One Araujo. last chance. One last. नहीं. One last किसने chance. नोटिस बोलो नहीं किया ये पर ये? तो किसी ने ये नोटिस नहीं किया? अच्छा कुछ नहीं. Some uh, most of the people have actually said he has actually been one of the best players for Barcelona. Pedri. Christensen. Christensen. Exactly. Exactly. Christensen. Oh. Yeah, he's been मैंने good. उसको Yeah. डिफेंस में नहीं डाला था Was. इसलिए पता है अपने टीम ऑफ द सीजन में because it was being very, very Yeah, biased. but But in his Christensen. Yeah. breakthrough season, he has he has actually been a very good ball playing center back with mm, Araujo. Yeah. yeah. Yeah, I mean, Okay. they complement each other a lot. Araujo is Yeah, good defensively, and yeah, Christensen is very good on the ball. Christensen is yeah, really good on the Yeah. ball. yeah. Yeah. Exactly. So Aerial भी अच्छा है उसका. Ability भी बहुत fantastic है उसका. Yeah, हाँ. हाँ एंड ही हैज एक्चुअली मतलब वो अच्छा सेटल हुआ है जावी के गेम yeah, स्टाइल में प्लेइंग स्टाइल exactly. में व्हिच इज गुड फॉर हिम. उसको थोड़ा बहुत Yeah, वही वो चेल्सी में वो मल्टीपल मैनेजर्स के साथ खेला, सो आई थिंक उसको वो भी एक्सपीरियंस काम आया. सो या ही इज डन yeah, वेल. लाइक yeah. आई He's हैव been नॉट हर्ड ऑफ absolutely phenomenal. क्रिस्टियन दैट. या क्रिस्टियन का ऐसा कुछ नहीं सुना कि भाई उसको ही स्ट्रगलिंग या फिर उसको रेड कार्ड वगैरह कुछ मिला. आई थिंक इट्स बीन वेरी रेयर. सो Yeah, या but he has been very good. मतलब you have to be like, I mean, first season में if you have to become this great, मतलब it has to be something different यार. Because Yeah, the I game he know. has managed like clean sheet. बार्सिलोना का पता है like at least 11 games में they have managed to get a one goal victory over each and every team. Yeah. और One उसमें nil, 1-0, 1-0. बहुत 1-0 से बात सुना that was इस हराम बॉल season. actually पता है पूरा हराम बॉल खेल रहा है और ऊपर से सेंटर बैक कौन नहीं था नहीं, पता है एक्चुअली क्रिस्टियनसन. हराम बॉल नहीं खेला है. वो लोग चांसेस बहुत मिस क्रिस्टियनसन. किए. बहुत मिस किए चांसेस. That's true. हाँ या
So, but still, it's good कि at least La Liga में थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा unpredictability है. Like it's not just one team winning the league all the time. Like I think this is the second time that Barca have won the league in a row. Is that right? No, no, no. इन So this is रो the नहीं, लास्ट ईयर मैड्रिड, लास्ट ईयर रियल वन. last year Last Madrid year जीता Madrid था. था, but हाँ, but it's been like change हो रहा है. Like at least in La Liga, it's not been consistently one team. So it's been changing आई over थिंक from what I can see. Like, उसके पहले एटलेटिको था. आई थिंक Yeah, एटलेटिको हाँ, वन विद दैट लुइस yeah, सुआरेज थिंग, and then yeah, yeah, Real Madrid and then Barcelona this year. Again, let's see. Real Madrid will definitely come back strong. वैसे तो वो yeah. yeah, शांत नहीं बैठेंगे. They will buy players. I think Benzema is also leaving, so they are going yeah. to buy players. And I think Mbappe. They're after I mean, Kane. Kane बोल रहे हैं. in fact, जूड बेलिंगम को साइन कर भी लेंगे शायद से. हाँ, Almost it's done deal for him. almost भाई done. क्या मिडफील्ड है उनका यार. Yeah. One for the future. Hmm. Chomeni, Camavinga, Jude Bellingham, Valverde. भाई भाई fantastic. I mean, Yeah, one for fantastic the future. I actually. mean. one for the future. हाँ. Yeah, for at least next ठीक है decade गाइस. तो अच्छा their squad. या और 5 साल तो आगे मिडफील्ड देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Yeah. बढ़िया, Hmm. एकदम फैंटास्टिक. तो Actually, प्रशांत, वो बात. Hmm. व्हाट इज योर Yeah, प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन? आई नो इट्स yeah. गोइंग टू बी So, अ कंट्रोवर्शियल वन फॉर यू. तो कुछ कंट्रोवर्शियल uh-huh. नाम डालेगा, बट हाँ बता बता. Well, yeah. So let me start off with it. Uh, एक गोली मिनट एक में मिनट I पहले तो would उससे पहले मैं कमेंट पढ़ लूँ इसका. गोश्त जेमा, go them. मीटोमा अच्छा, हाँ, इन प्रीमियर लीग. अच्छा, प्रीमियर लीग हम आएंगे, हाँ. बट या प्रशांत स्टार्ट किया. गोलकीपर. Okay. So my goalie would be Ederson. He is obviously he is the one who has he is the league winning goalkeeper. Uh, ओके. so I think he has been fairly good. He has been fairly consistent. He has not done any he has not had any slip up this season. I think I was actually you know uh, I was thinking about putting the Arsenal goalkeeper Aaron Ramsdale because he has ओके. also improved quite a lot. But I would go for Edison. Uh, in defense, I would have Kyle Walker. Obviously, he has been very good. Kyle Walker, Luke Shaw on the other side. Central defenders would be uh, one would be uh, Lisandro Martinez, and the other one ओके. would be um, okay. I'm a little bit circumspect on this one, but I'll go for Varane. I'll go for Rafael Varane. You know, just because I ओके. have that So slight 4 out of 3 डिफेंडर्स फ्रॉम यूनाइटेड. वाह. ओके. गुड वन, गुड वन. three out आगे of four. आगे. Yeah, नेक्स्ट. 3 out of 4. मिडफील्ड. Yeah. So okay, midfield would be Casemiro, uh, Gundogan, and Mahrez. So that would be like a 4-3-3. Okay, and up front, I would have Haaland up front, Rashford on the left, and on the right. Okay, I know that it has been a very United and City lineup so far. So on the right, I would probably go for someone else. Let me see who else is available. Oh yeah, uh, uh, how about Saka? Yes, uh, Saka on the right wing. Hmm. So योर टीम यू डिसाइड. Rashford on the left. हाँ. साका ऑन द Uh, राइट, हालैंड yeah, सेंटर Rashford on the स्ट्राइकर. left. या. Yeah, या. yeah. So 4-3-3 formation. That's my Premier League 11. ओके. व्हाट अबाउट यू अग्रीम भाई? Yeah. Mera, so I'll go for goalkeepers. Ederson has to be the number one because he's been a standard again this season. Uh, Defense पे center backs I'll put Saliba. Saliba had a great start despite not winning the league. या. We all know because या. and second center back has to be Ruben Diaz for me. ओके. ओके. And Yeah. fullback पे I can't keep Trent on fullback because he had a horrible last के games he recovered anyway. But I'll keep fullback पे this guy. Ake had a good season. If people have not ओके. like ओके. या. इन्वर्टेड फुल बैक. या. Yeah. inverted fullback. या.
He's Okay. been really good. Yeah. And last में I have to pick. I'll pick this guy. What's his name? Duksha. Duksha had a very good Okay. season. Yeah. Okay. Midfield is very tricky यार. Midfield is very tricky because एमशे ने तुमको every सजेशन दिया है. एमशे says Bernardo, Gundo, and Rodri. Yeah, go on. And Sorry. up top we have George Bush. midfield Kevin De Bruyne has to be there मेरे हिसाब से. Mm-hmm. Mm-hmm. Kevin De Bruyne followed by Casemiro. I won't put because उसका initial season, so मतलब he's been good but not in respect to like all other players. I'll put McAllister. McAllister has Okay. been really good for me. Okay. Yeah. McAllister. Good choice. Yeah. And third I will put based on performances, Enzo. Okay. Enzo Fernandez. Good. Enzo. Okay. Yeah, Good. Okay. Enzo. That's a Yeah, novel choice. yeah, yeah. I'll tell you why, because Enzo, despite having a very bad what do you call players around him, he hasn't able to gel up with any of them. But okay, if you see every game now, he has at least managed to clear at least 8 to 10 clearances every time. उसके प्रीमियर लीग स्टार्ट देखना, he has been actually good. जब से वो बेंफिका से आया ना, चेल्सी में he Hmm. has been actually good. So I'll Okay. put Enzo over there. Okay. 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 And front three? And All right. front three, front three is tricky again यार. Hmm, Rashford, Hmm. Mm. Erling Haaland has to be there. Mm. Mm. And right पे कौन रहेगा? Rashford is left wing ना? Yeah, Yeah. left Or wing. right? Yeah. Right पे उसका Left, क्या Left. left. लगता Left. है? Your team. You can put it in because he plays on either side of the wings. But yeah, Yeah. left is his favorite position. Yeah. How about Vegas? Because मतलब यही सीजन तो मतलब हाफ अ सीजन पे है ना, so I can't judge him यार on Uh, based on that. yeah. Yeah. I know. Overall, I'm wondering who MK is referring to as George Bush. Do you have any idea? George Bernardo, Bush, no. Bernardo for We'll me. put Bernard on the right. Oh, okay. Bernardo Okay. on the right. Good Yeah, choice. Yeah. yeah, Yeah. Yeah. Good choice. yeah, Yeah, for me, goalkeeper will be Aaron Ramsdale. I thought he got a brilliant season. So yeah, yeah, Aaron Ramsdale. Centre backs will be Licha Martinez and William Saliba. Two of the yeah. top centre backs had a fantastic season. I'll keep on the right fullback Kevin Trippier from Newcastle. Led Newcastle Hmm. to the Champions League fourth spot, and he was fantastic this season. Left में Brighton fullback Estupinian. I'm not sure whether you've heard of him. He's been Yeah. brilliant. Yeah, yeah, I had the Heard temptation about. of putting Luke Shaw there, but Estupinian has been brilliant. He got a good yeah, World Cup with yeah, Ecuador, and he's played really well with Brighton. So Estupinian will be my left back. Midfield में I'll put Casemiro, defensive midfielder, and the other two midfielders will be De Bruyne and Martin Odegaard. I think you guys missed Martin Odegaard. He got 14 goals this yeah, season, and yeah, assist भी बहुत ज़्यादा है. So I mean he yeah. is running in for the player of the season. So Martin Odegaard, another brilliant player for Arsenal. So Hmm. Odegaard, Casemiro, and De Bruyne, my mid three and front three. I think the same as Prashant. Although I don't think yeah, you could talk about Mitoma. He's been brilliant, but I think Rashford, Haaland, and Bukayo Saka Hmm. Yeah, candidate, but I think Rashford is ahead of him. Maybe in yeah, upcoming seasons he can be in the 10 team of season, but right now this is what my team of season is. And I was tempted to keep Alisson this season. Alisson had an equally good season. I know Liverpool didn't qualify for the Champions League, but Alisson Becker was really good in the goalkeeper. yeah. I mean, but Ramsdale again, this year he upgraded his performance, He and has I thought improved a lot. he deserved. Yeah, yeah. Yeah. The man UCL का भी himself, कर लेते George Bush, his wing play, he's 9-9-1-1. हैं. क्या कर 9-1-1. रहे भाई यार? Oh, good one. Good one. Yeah. तो अभी Okay. यूसीएल का भी कर लेते हैं ना, टीम ऑफ द सीजन. You हाँ Champions चलो League. UCL का चलो. हाँ, Okay. चैंपियंस लीग भी कर लेते हैं ना. Yeah. Go on. फाइनल तो के अग्रिम में बाद आप करते शुरू हैं. कीजिए. आप लोग स्टार्ट हाँ, करो. I think yeah, फाइनल की बात कर सकते हैं यार वो. हाँ नहीं कर लेते हैं ना, उसमें क्या है.
नहीं, बिकॉज करने यू में नीड प्रॉब्लम टू नहीं है, नो वो ना ठीक है। कि वो तो एक मैच बाकी है ना, फाइनल प्रीमियर लीग खत्म हो गया और चैंपियंस लीग बाकी है ना एक मैच, तो वंस इट इज डन देन वी कैन डिसाइड कि हु एंड ऑल दैट, वैसा वो हिसाब से। चलो ठीक है, तो वैसे ही कर ठीक है, लेंगे। बट चैंपियंस लीग फाइनल प्रेडिक्शन, कम ऑन। हैज टू बी मैन भाई सिटी अभी यार। ये क्या मतलब, अभी तो सिटी यार, अभी इजीली मेरा प्रेडिक्शन एक ही है, इंटर विल हैज पुट टू अ बी मैन फाइट, सिटी आई यार। डोंट से। सॉरी सॉरी, नोबडी हाँ, ये मैन तो सिटी प्रेडिक्ट। विल विन ऑलमोस्ट 2-3 2-1, इजीली। तीन तीन गोल, तीन गोल, आराम थ्री से। थ्री गोल्स नील 3-0, मैन सिटी। 3-0. Yeah, या I don't see Inter putting एनी any fight एफर्ट्स, हाँ या whatsoever. दिस मतलब इन एक्चुअली लोगों कुड हैव को बीन तो पता बार्सिलोना, है, पता है? नहीं, फाइट तो करेंगे भाई, दिस एक्चुअली फाइट कुड तो हैव बीन करेंगे भाई। बार्सिलोना गाइस। Inter will not put up a fight. मतलब the only fight that they would put up is to run the way City want. That's all. मतलब मैं I बोल रहा don't हूँ see गाइस, anything happening. हाँ, गाइस आई जस्ट this वांट टू could have been से वन Barca, थिंग। you're saying. बार्सिलोना, हाँ ये हाँ एक्चुअली बोलो भाई। बार्सिलोना would have won all their games, right? And not हाँ getting beaten by Inter. Barcelona would have been taking the finals. भाई ये बहुत बड़ा इफ है, ये बहुत बड़ा इफ है। बहुत बड़ा हाँ है, मैं बोल रहा काफी हूँ। काफी बड़ा। बहुत हाँ, बड़ा मतलब इफ है। काफी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब काफी ही ऑप्टिमिस्टिक एकदम, मतलब काफी यूनाइटेड से हार गए भाई। ऑप्टिमिस्टिक हाइपोथेटिकल। हाँ वो तो मेरे को एक्चुअली पता है क्या लग रहा था, वो मेरे को गेम ऑलरेडी लग रहा था, मतलब बार्सिलोना वाज लाइक लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट व्हाट यू कॉल वंस दे ड्रॉप इनटू लाइक यूरोपा लीग ना, वो लोग बोल दिया भाई हम लोग को खेलना ही नहीं है ये। मेरे को तो यही लग रहा था, बिकॉज आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना, बार्सिलोना हैड पुट जीरो एफर्ट इनटू दैट गेम। no, they did put effort. नहीं यार, I mean, both games were very entertaining to watch. मतलब अगर effort नहीं डाला होता ना यार तो 2-0 से United टू would have ऑल won कर both दिया यार। games. हाँ, और फिर एक और गोल का लीड लिया, फिर सेकंड हाफ में दे गिव अवे। नोबडी प्लेज दैट वे यार। तो भाई हारने अरे हारने के बाद तो गेम हो गए। हारने के बाद जब क्या हार गए ये वो बोल नहीं रहे लोग। नहीं, हैं? ना दिस इज इटालियन व्हाट टीम्स। व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। हम्म, Italian teams only go for penalty. The नहीं, scores remain 0-0 or even 1-0 this for is City even take the 1 into Inter. 6 till Inter might 75, win Inter might them. win. Then Inter have Inter clutch have players. such players. Yeah, but डेम्बेले इंजर्ड। मतलब अच्छा तू अगर बोल रहा है कि the thing is, डेम्बेले इंजर्ड था इसलिए बारसा हार गया, ऐसे बोल रहे थे हमसे? तो भी नहीं करता यार, तो भी नहीं कर पाता बारसा। anyway, ये तो मेरा coming दैट्स व्हाट back, माय हमारा थिंकिंग भी इज, बिकॉज़ फ्रेंच मेरे को लग प्लेयर। रहा था ऑलरेडी दैट गेम। हाँ नहीं भाई, नहीं भाई, दे लॉस्ट, दे अच्छा खेले थे वो लोग। फर्स्ट गेम में भी नहीं यार, राफिना ने गोल मेरे को वोल तो मारे बहुत थे, दे बहुत वर लूज प्लेइंग। लग रहा है, मेरे को बट नहीं लग रहा था। यूनाइटेड बिकॉज मैं ट्विटर यूनाइटेड वेयर ट्विटर द पे भी बेटर देख रहा टीम। था, ट्विटर पे भी second half. दे वर सेइंग In the नहीं भाई, second leg, they these did guys were well. like least bothered भाई about playing this game. नहीं भाई, नहीं। सेकेंड लेग में देखो भाई, ओल्ड ट्रैफर्ड पे कुछ भी बोलो, यूनाइटेड दिस सीजन हैव बीन ब्रिलियंट। दे बीट आर्सेनल, दे बीट How मैन obviously, सिटी। तो I'm सेकंड not denying ओल्ड I'm not ट्रैफर्ड पे denying that. तो I'm not denying. डेम्बेले Then मार्टिनेज I'm को रुला देता है। एक चले डेम्बेले खुद रो देता है। पहले पिच वो पे तो खुद आ जाए रोते भाई रहता है। डेम्बेले। आप पहले पूछते तो बट या है आई मीन, भाई। बट यस आई मीन, बारसा डिड नॉट प्ले गुड। बेस्ट गेम वाज दैट मैड्रिड गेम। अच्छा, 4-0 मैड्रिड वाला गेम। हाँ जो 4-0 4-0 बोल रहा हराया है क्या? था। वो तो तो 4-0 हम, हारा था। हाँ हम, वो तो हमको भी लगता है बेस्ट, हमारा बेस्ट गेम मैन सिटी के सामने 2-1 था। हाँ वैसे वही तो हम लोग, मतलब जो पहले जो हम लोग 6-1 जो हारे थे, जो हम लोग 7 हारे थे, वो 6-3 हाँ बाय हाँ 6। वही, हाँ वो एग्जैक्टली, हम लोग दिल से नहीं खेले थे वो 100%, इसलिए नो हारे, ऐसी नो बात है, बट आई बट मीन, ठीक है। बट या हाँ बार्सिलोना ओवरऑल हैड अ वेरी गुड सीजन। आई मीन या ला दे लीगा आर जीतना नाउ और 38 ऑन द गेम्स। राइट Yeah, they're on the right path, ट्रैक। and 2-3 good transfers. They make a good decision. I know a lot of Barcelona players will not, fans will not agree with me, but I don't think Barcelona should invest in getting Leo Messi back. They should look to sign या good young players and नहीं, मैं develop team I for will a future disagree in on the this target. one. I will disagree on this one. You know why? Because Hmm. देखो एक पॉइंट क्या है ना, I mean getting him, I mean age factor I understand, but the second point is commercial aspect. Commercial aspect के लिए you need a player like Leo Messi. यार मतलब if he signs for 3 seasons, Barcelona is getting 300 million Hmm. straight enough वो from commercial भाई उसको aspect. वेजेस उतने भरने पड़ेंगे एंड ये 25 यू हैव मिलियन टू। बोल रहा है ना, अरे उसको भी लेकिन 25 भाई मिलियन उसके है। बाद तो ठीक है, लेकिन यू हैव टू एम्प्टी सो मेनी, आई मीन इतने प्लेयर्स को जान
सेल हाँ करने पड़ेंगे यार अल्बा अल्बा का कर दिया ना, सो देखो भाई, प्रॉब्लम क्या था लेकिन ना, अलाबा का वेज ज्यादा नहीं था भाई, ऑलरेडी वो रेड्यूस नहीं वेज पे था अलाबा। 650 मिलियन से 450 मिलियन कर दिया ना। दैट वाज द मेन टारगेट ऑफ बार्सिलोना टू अचीव ना दिस सीजन। एंड ऊपर बट से आई और आई भी तो प्लेयर्स आई चाहिए स्टिल ना। बट क्योंकि और भी तो प्लेयर साइन करने हैं उनको यार, आई मीन दे नीड लॉट ऑफ प्लेयर्स, यू नो। ऑब्वियस, बैक अभी उनके हाँ वो तो 11 कर प्लेयर्स हो देंगे। गए हैं, but I think wing they I feel they on the wings they're still struggling. You know, I know they are looking to sell the young kid, क्या नाम है उसका, Antofati. लेफ्ट फ्लैंक आंसू पे फाटी, खेलते हैं, Ansu आंसू Fati they're फाटी। looking to sell. I also heard they're looking to sell Rafinha. I'm not sure, but I think they don't have players on the wing. They don't have या world class beaters, नहीं world beaters ये on क्या that नाम wing. इसका, क्या नाम इसका, आई फॉरगॉट दैट गाइस नेम, वो वाज प्लेइंग फॉर द ब्राजीलियन लीग, विक्टर रोके, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर Better, okay, दे से। हाँ. But हाँ again, you have to invest a lot. I mean, I feel that it's time for Barcelona to move. मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है फुटबॉल में, कमबैक्स आर नॉट गुड, यू नो। एज अ यूनाइटेड फैन आई हैव सीन, यू नो, अ लेजेंड कम रोनाल्डो बैक का है। एंड यू नो इट वेंट रियली बैड, यू नो। तो यू नो आई वुड लव लियो मेसी टू यूनाइटेड बार्सिलोना, बट इफ यू लुक एट यू नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो तो ये यंग प्लेयर साइन करो, बिल्ड अ टीम अराउंड जावी, गॉट अ फैंटास्टिक मैनेजर इन जावी, he's built a brilliant team and hats off to him. पहले फुल या सीजन में उसने अपना ला लीगा जीत लिया, यू नो, हैविंग रियल मैड्रिड ऑन टॉप ऑफ द फॉर्म। इनको फॉर्म बहुत सही था रियल मैड्रिड का, उसकी उस पे ला लीगा जीतना एक बहुत बड़ी बात है। तो यू हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर अगेन, इफ यू कैन मैनेज लियो मेसी एंड गेट इन यंग प्लेयर, नथिंग लाइक इट, उसका लीडरशिप काम बट आएगा आई थिंक एंड ऑफलोड तो यू नो करेंगे ही इज अ यार, ब्रिलियंट प्लेयर, बिकॉज नो बॉडी। बिकॉज मेरे हिसाब से पता है क्या प्रॉब्लम है, वो जो जो सैलरी कैप जो फिट करना है ना बार्सिलोना को, वो तो कर देगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गेट दिस गाय एक्स, क्या नाम है, कैसी है, कैसी है का, इंटर इज आस्किंग फॉर लाइक उसका सैलरी 30 ज्यादा मिलियन। नहीं है भाई, उसका सैलरी ज्यादा नहीं है, उसका सैलरी नहीं बट ऑफलोड कैसी करने की का। बात कर रहा हूँ ना, कैसी का बात, बट उसको ऑफलोड करने के लिए बार्सिलोना विल बी गेटिंग 30 मिलियन उसके लिए, एंड प्लस नहीं भाई, वो अलग है भाई, वो अलग है, वो फी अलग है। द वेज कैपिंग उसका ला लीगा का बहुत फालतू हो गया है, हाँ हाँ अभी वो यार तो मैं समझ रहा टाटेबाज हूँ, ने किया, वो बट वेज कैपिंग को हाँ पहुंचना बहुत जो जरूरी है। प्लेयर्स को लाना है, वो प्लेयर्स को लाना है, उसके लिए तो यू हैव टू सेल प्लेयर्स आउट ना। करेक्ट, एंड इफ हाँ यू लुक एट वेज बिल, आई थिंक बुस्केट्स और इसका वेजेस बहुत ऑलरेडी कम कर दिया था उन्होंने, जॉर्डी अल्बा का वेजेस, जब वो उनका या तो लास्ट दो सीजन में उन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया था। तो रीनेगोशिएट करना था ना, बट बोथ ऑफ देम सेड वी डू नॉट वांट टू रीनेगोशिएट, हम लोग निकल रहे हैं, तो उल्टा अच्छा हो गया ना बार्सिलोना के लिए, नॉट टू रीनेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट। but I still feel if you have वो to तो get जून Leo 30 Messi, के you have पहले to तो कर देगा यार, sell a lot of players. बिकॉज फेरन टॉरेस को तो अंसु वैसे भी फाटी निकल जाएगा, रहे हैं, फेरन टॉरेस को तो ऑलरेडी निकाल रहे हैं, so Aston Villa is like they basically they are stating ना कि they want to buy him for like 30 million। मैं ठीक है यार, 30 million जो भी पैसा आ रहा है, प्लीज आई वेलकम विथ लाइक ओपन आर्म्स, भाई आओ भाई, पैसा लेके, पैसे दो और तुम प्लेयर लेके जाओ, नॉट बॉदर्ड बाय इट। the only thing what I want currently is to have a positive, what do you call, cash flow in my club's account। But the thing is, see, the kind of players that they've signed, like Rafinha, Bolo, या फिर even Son Casey, you are expecting, like from the as per the rumors, you are expecting like teams like Inter and Milan to pay for him, right? मतलब वो खुद हाँ cash strapped teams है. So how much do you think they are going to live up to those price tags? मतलब will they even be able to afford? I don't know. I'm a little skeptical about it. देखते ना, yeah. बिकॉज देखो So I एंड ऑफ would द डे see देखो। personal level पे I want that reunion to happen. You know, and I'm in favor of that reunion, but you know it no, I'm scared that you know it doesn't again put Barcelona back in debt, and you know मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा प्लेयर्स ये करने पड़ेंगे, बिकॉज ला लीगा के बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं रिस्ट्रिक्शंस है, आई प्लस थिंक उनका गोल्ड एंड फाइनेंशियल स्लीपिंग करंट प्लेयर्स। सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने इतने लीवर्स पुल कर दिया था लास्ट ईयर। तो अगेन यू नो आई होप यू मेरा नो अग्री बाय ऑलमोस्ट व्हाट यू सेइंग सेलिंग आई। निको गोंजाल्वेज ना, निको गोंजाल्वेज उनके अरे भाई पास है। उनकी कितनी सैलरी है भाई, उसकी कितनी कम सैलरी है दे उसकी हैव यार। लाइक फाइव व्हाट डू कॉल यूथ प्लेयर्स इनसाइड ऑलरेडी बार्सिलोना। उनको ऊपर से एंड गावी की गावी का एब्डे कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन एब्डे फिक्स एब्डे करना है। वाज ऑन लोन ना, एब्डे वाज ऑन लोन, एब्डे का एक कोई बिड आया है प्रीमियर लीग क्लब से, दे आर आस्किंग फॉर 30 मिलियन। तो मैं वही भाई बोल रहा लेकिन हूँ, जो भी दे रहे हो बहुत भाई, कम सैलरी है, ओवर ना। मैं सैलरी कैप की बात कर रहा हूँ भाई, मैं सैलरी कैप की बात कर रहा हूँ, सैलरी कैप है सबके की बहुत कम है। ऑलरेडी उनका वो गावी का सिचुएशन है
वो contract situation में जा when he's gone back to his previous contract. So that they have to fix, and then they have to look to sign Leo Messi again. Like I said, I am in. I mean, it's really good. I'm in for that your reunion, and you know, I know how much you guys love Leo Messi. He's like a god for you. So यार है होना चाहिए if you guys want, रोबर्टा and you एक्सपेक्ट know किया if तो it सही है will लियो work out. मेसी, but let's see. Eventually, I don't think Barcelona Oh, already yeah, has. let's keep our fingers crossed. If it happens, But nothing like it, you know. क्योंकि they already sold बारसा टीवी ना, बारसा टीवी they have sold ना, उसका भी पैसा मिला है Yeah, बारसा को. I know, but again, I still feel that वो salary cap का issue होने वाला है. And if your president is good enough to sort a solution, nothing like it. You can Yeah, have your legend back at the club and you know celebrate your trophies with him. But yeah, let's see. You know, big next 2 months for every yeah. हाँ, इसको तो football club. डिस्कस करना ही So, है अपने को. yeah, big 2 months for clubs like Yeah, Barcelona, Man United, Chelsea. You know, teams who are struggling. Liverpool is again another team. So yeah, it's going to be huge window for these some clubs if they have to move to the next stage. It will be another day in office for Man City. You know, they will handpick players they want to buy. They'll pay them huge wages. They'll pay the transfer fee and they'll get them. You know, they'll keep on winning trophies. But yeah, very important that clubs like Liverpool, Newcastle, Man United, Barcelona, you know, raise the level, you know, and go to the next level. Very important for Barcelona to go deep into the Champions League. For United yeah, clubs like United and Chelsea, they have to compete for the title. Chelsea, especially, you know, now the season they're out of top four. They won't be playing in Europe, so they will have less games to play, and the focus will be on finishing in the top four of the Premier League with Mauricio Pochettino, the new manager, and also they were looking to sell a lot of players. So it's going to be interesting transfer window. Before we wrap it up, guys, who do you think will this window will be the most impactful player? I mean, हर एक विंडो में एक ऐसा प्लेयर हो जिसके बारे में हम बात करते यू नो पूरा विंडो उसके बारे में मतलब क्या बोलते हैं शो स्टॉपर जैसे एक प्लेयर होता है जिसके ट्रांसफर ड्रैग होता है और बहुत तो क्या लगता है तुमको इस सीजन कौन होगा ऐसा I प्लेयर hope it is not जिसका Frankie de Jong. I hope it is not Frankie de Jong. No, I That don't is my think so. clear. I think Frankie de Jong is very As clear. long as He Glazers are loves there, Barcelona. He loves uh, Barcelona and he stays at Barcelona. So I I don't don't think think United should even waste. United अभी कोई Hmm. दूसरा bet डालने And I वाला don't है think they will waste time this for time. for This season तो वो time waste नहीं करेंगे. hmm, MCS is hopefully, yeah. McAllister. Yeah. I think मैकेलिस्टर McAllister हो to जाएगा. Liverpool is done. हाँ, It's a done deal. Yeah, I डन don't है think भाई. anything. it's a Yeah, done deal. Yeah. I thought Jude Bellingham would be the one, but ये तो आराम से हो गया. रियाल ने हाँ साइन वो कर भी दिया हो उसको सकता है. पर्सनल टर्म they just have to agree Hmm. the payment terms कैसे पे करेंगे that's it but yeah any I names think that pop up in your mind I think I think I just said today Mason Mount is he is oh coming to god United. bhai So any player, I don't know if what any what player is is going on coming to there United, that is supposed to be a saga anyway. मतलब वो कितना ही फालतू प्लेयर ही क्यों ना हो मतलब यूनाइटेड है मतलब it will drag on for a time के लिए. So Mason Mount, that's the name I Harry was going Kane, to say Harry Kane that's the name yeah, I was going to say yes yeah. पर Sadio वो Mane लिंक्ड है ना also रियल से. because Sadio लिंक्ड Mane विद also रियल. uh, या, because yeah he's Sadio going Mane back. हाँ, yeah so वो किमिच भी हो वही सकता है बाय द वे गाइस. किमिच भी हो सकता है. किमिच नहीं भी भाई विल बी नहीं मस्त. आएगा भाई मत बना किमिच होप नहीं पर ही बोल रहा हूँ नहीं वो नहीं आएगा हाँ, बार्सिलोना पर ही बोल रहा हूँ मत बना होप भैया आए क्यों जर्मन नहीं आएगा. प्लेयर्स बट ऑलरेडी इतना इतना सिचुएशन लोग ने वो टेंस कर दिया ना बिकॉज दे स्टैक ओलिवर कान आफ्टर दैट गेम. और वो दूसरा भी हाँ but साली that हामिद was भी गए हाँ Hassan Salihamidzic but that was a good move. वो दोनों ने they were not up to it मतलब they were not taking the club in the right direction. That was actually very clear. So वो लोग को sack and I करके don't actually think बहुत बड़ा किया वो लोग ने. हम्म, किमिच देखो कमिंग भाई यार, रोमेरो जैसा जेरार्ड रोमेरो जैसे बात मत कर किमिच कमिंग नहीं होने वाला है अननेसेसरी और बारसा हाँ फैंस को हाइप कर हाँ तो वो मतलब कैसा सबसे होगा बड़ा पता है दुश्मन है बारसा like फैंस का जेरार्ड रोमेरो हाँ वो तो मजे एग्जैक्टली नो लेता है भाई. होगा तो अच्छा होगा तो वही होगा दिव्या वो लास्ट ईयर जैसा समथिंग बिग इज हैपनिंग समथिंग बिग इज हैपनिंग ही इज हाँ हैविंग नथिंग इज पिज्जा हैपनिंग. इन मतलब ऐसा बार्सिलोना आई सेड भाई he literally made Barcelona fans believe that Bernardo Silva will join Barcelona in it हाँ on the deadline day
लिटरली मेड एवरीवन वाज ऐसा लगा बट नहीं ठीक अच्छा है भाई आई थिंक यू गाइस विल साइन आई थिंक यू गाइस विल साइन गुंडोगन मुझे हाँ लगता है यू गुंडोगन गाइस तो विल कर साइन पाएगा गुंडोगन अभी कर गुंडोगन पाएगा आएगा और मे बी Yeah. रूबेन नवेस Hmm. दैट रुबन दोस नेवेस ऑलमोस्ट आउट बोल ऑफ रहे डन है दे आर सेइंग ऑलमोस्ट आउट डन ऑफ है दोस टू प्लेयर्स एक साइन करोगे तुम लोग then I Hmm. completely I agree think with that. I I think think I Gundogan is a have a better feeling. option, but yeah, and I don't know like why Barcelona is going for Ruben Neves. I don't know. He's never impressed me with his signing. No, no, he's brilliant good. player. You Even know, अगर He's यूनाइटेड brilliant. यूनाइटेड ले रूबेन नेवेस को मैं तो बहुत खुश हो जाऊँ बहुत भाई बहुत सही प्लेयर है बहुत ही सही even प्लेयर है I would have preferred actually preferred this guy Bernardo Silva because उसका his अरे understanding. बट अलग प्रोफाइल है भाई प्रोफाइल ही अलग है Hmm. बर्नार्डो सिल्वा No, इज but मोर अटैकिंग he, या ही इज गुड हाँ, डिफेंसिव रेट अच्छा है उसका वर्क रेट बट hmm, डिफरेंट प्रोफाइल प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा इज मोर ऑफ अटैकिंग प्लेयर क्रिएटिव है रूबेन नेवेस का ही कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द बैक फोर और उसका पासिंग भी ब्रिलियंट है उसका yeah. टैकल्स अच्छा है उसका विजन बहुत ब्रिलियंट है वो भाई उसको बुल्स का गेम देख तू द वे ही स्प्रेस दोस पासेस ना लॉन्ग बॉल्स बहुत ही बढ़िया आई मीन आई लाइक रूबेन नेवेस अ लॉट one of my favorite players and United were to get He's him, already then I like would be very 29, happy. 30 ना so मेरे को नहीं सही भाई नहीं लग रहा. 24-25 का है वो बहुत No, छोटा है no, वो Ruben नहीं Ruben Neves is देख not ले एक 29. हाँ, गूगल he's कर ले भाई 24, उसकी 25. एज No, he's 24 not 25 है भाई 29. बहुत छोटा है वो हाँ, बहुत वो छोटा है वो. And वुल्स में 20 साल and का तभी आया था वो वुल्स में and the other thing is कि one thing we both have not mentioned is कि he is known for his long ranges, his free kicks, ओ his भाई long 26, range shots. एग्जैक्ट वो हाँ, पेनल्टी बॉक्स का शॉट लेता ना वो भाई तगड़ा शॉट लेता है वो 26 है. तगड़ा He's shot 26. लगता है. 26 He's 26, yeah, exactly. So he's not Hmm. that old. So Hmm. he will be a good signing for Barca, even for United if he does go there. Kimmich, I don't think he will join Barca. I was wondering नहीं भाई वो where बायर्न प्लेयर है N'Golo Kante will go. Huh. I wonder where N'Golo Kante will go because he's likely या to leave Chelsea. करेक्ट PSG. चेल्सी He PSG might go जाएगा to PSG. PSG. नहीं भाई पीएसजी आई Yeah. थिंक पीएसजी आर लुकिंग टू साइन यंग Just to प्लेयर्स keep Mbappe happy. हाँ तो कांते को क्यों साइन नहीं करेंगे? भाई Recently एम्बापे आई he's थिंक gonna विल play. नहीं भाई Mbappe को नहीं बोलेंगे यंग भाई यंग प्लेयर साइन लव करेंगे टू भाई दोनों देखो फ्रेंच प्लेयर अपन साथ में बैठ के गोल मारेंगे. वही रहेगा. नहीं नहीं, भाई आई डोंट थिंक कांटे I don't. कांटे विल हाँ, गो कांटे विल गो टू अ प्रीमियर लीग क्लब यू नो लाइक अ क्लब लाइक एस्टन विला ऐसा कोई क्लब में जाएगा वो वेस्ट हैम दैट्स व्हाट वगैरह आई हाँ. फील बट या Yeah. मेरे को वेस्टेबल लग रहा क्लब है में भाई जाएगा एस्टन वेरी गुड एस्टन प्लेयर विला विल डू वेरी वेल नेक्स्ट सीजन इन द यूरोपा लीग. yeah they will they sign a lot of players they're Yeah. going to sign a lot of players I can tell you that so is Newcastle even Newcastle is going to do really well they're going to upgrade themselves they're going to buy good players now that they're in Yeah. Champions League so watch out for Newcastle again and you know They there are might sign good Ronaldo players again. in the market I mean एक्चुअली there पता are है good players in the ये market if you look at आई जस्ट वांट टू से पता है एडी हाउ को अगर अभी निकाल के इफ दे पुट मोरिनियो नाउ ना दे विल विन द लीग नेक्स्ट सीजन 100%. नहीं 100% भाई बता रहा नहीं हूँ मैं. भाई हंड्रेड नेक्स्ट ईयर परसेंट लीग वापस मैन सिटी Mourinho जीतने वाला है भाई मैन नहीं सिटी बोलो ही गिव जीतेगा नहीं गिव जीतेगा नहीं मोरिन्यो नहीं यार आई एम जस्ट टेलिंग यू नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू Newcastle गिव दिस might टीम win, but give this not with Mourinho. team and the money to Mourinho to spend on you on a team like Newcastle. देख कैसे जीत जाएगा वो. अरे भाई Eddie Howe is doing an amazing job. He is amazing I'm actually not job and denying he that. deserves I'm not हाँ, denying that. he and he deserves to If do you deserves that want a high exactly. He profile is manager ना, pe- if you want अरे a high profile भाई manager, Mourinho is still a high Eddie profile Howe is manager. English. अरे हाई प्रोफाइल मैनेजर Eddie Howe तब is जब English. उसको गान करे तो राइट नाउ आइडिया हाँ, आर डूइंग रियली वेल आई थिंक दे आर ऑन द and he is English. राइट ट्रैक And he and coaches well. if you So look at the if you look at Newcastle का signings ना they're not big names they spend some Yeah, money but they're not big names you know Bruno Guimaraes the Alexander Isak guy the yeah, center back Botman they're not big Botman. names you know but they're really good players तो उनका जो scouting है ना smart man. I mean, they've not just gone and spent money left, right, and center. So they have That's true. spent it very wisely. That's true. Yeah, That's true. they made smart signings. So मतलब Yeah, they really basically made उनका smart scouting signings. network Yeah. पहले से था, which has benefited these new owners. And I So feel, उन लोग you से know, हाँ, I have a very good feeling they will sign James Madison this season. Now that Leicester is relegated, Madison को टेलेमेंस भी ले definitely sign लेंगे. करेंगे वो लोग. James टेलेमेंस भी ले Telemans लेंगे तो वो नहीं लोग. होगा, Telemans नहीं लेंगे, but Madison definitely लेंगे. Yeah. Madison को श्योर शॉट साइन करेंगे लेस्टर इज रेलीगेटेड टेलेमेंस विल गो टू अनदर क्लब आई थिंक टेलेमेंस का लास्ट 1 ईयर में गेम डाउनग्रेड भी हुआ है ही इज नॉट बीन द सेम काइंड ऑफ प्लेयर बट मैडिसन इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर जहां भी जाएगा वो इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बाय द वे जेम्स मैडिसन बट जहां पे भी Hmm. जाएगा वो
That team gonna be brilliant. I think he'll either end up at Newcastle or Tottenham. My personal feeling, but let's see. I think Newcastle will pounce on that opportunity. And there are a lot of players. I mean, बहुत सारे players जो relegate हुए हैं. वो उनका साउथहैम्पटन का मिडफील्ड कौन है? वो यंग मिडफील्डर, नॉट वॉल्ट प्रॉक्स, और एक प्लेयर है ना, बहुत फेमस हो गया है वो, और एल से नाम है, I एल से forgot his उसका नाम है name. कुछ। Yeah, हाँ, yeah, बहुत yeah, बहुत yeah. ब्रिलियंट है साउथहैम्पटन का। इवन ही विल बी इन द मार्केट। अच्छा प्लेयर है वो। और कौन रेलीगेट हुआ? लीड्स हुआ। लीड्स के भी दो तीन प्लेयर है हु कैन गो इनटू द प्रीमियर लीग। तो दीज रेलीगेटेड टीम्स Yeah. के प्लेयर्स डिमांड में होंगे फटाफट साइन करने के लिए। Hmm. और For क्या नाम sure. है इसका, डेक्लन राइस क्या जाएगा, बोल रहे बायर्न बोल रहे हैं ना? नहीं भाई, बायर नहीं साइन करेगा। Bayern कहाँ? ही विल नॉट Bayern गो। नहीं. ही विल स्टे इन द प्रीमियर लीग। उसको प्रीमियर लीग जीतना है। मे बी आफ्टर 4-5 years Arsenal are going to put a bid of 92 billion. That's what I read couple of hours back. Once वेस्ट हैम फिनिश द कॉन्फ्रेंस लीग जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद दे विल हैव टॉक्स विद आर्सेनल। तो आर्सेनल आर लुकिंग टू बाय हिम फॉर 92 मिलियन। बट अगेन डेक्लन राइस का माइंड पता नहीं कहाँ पे है। ही मे इवन गो टू चेल्सी एंड चेल्सी विल हैव एंजो फर्नांडिस एंड डेक्लन राइस। तो वो बॉयहुड क्लब है, और मे बी यूनाइटेड विल स्वूप इन। तो यार बहुत सारे ऑप्शन उसके पास। तो मिडफील्ड का if you look at this year, there are a lot of midfielders in the market. Bellingham था, McAllister था, Moises Caicedo है, and then this Declan Rice guy. There are many midfielders in the market. Ruben Neves है। Yeah, तो यार इल्काई गुंडोगन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो he may move to a different club. So many players available in the market midfield में। yeah, Same with the striker situation. Harry Kane, I don't know what Daniel Levi is going to do. I know that United will go out of the way to sign him because that's the player they want. And yeah. I Hmm. was favoring Victor Osimhen initially. Hmm. 4 or 5 months back, if you have watched my video, I was favoring Victor Osimhen. But now I feel that Harry Kane is the right player. Not just in terms of scoring goals, but in terms of overall gameplay, he's the right candidate. है वो the kind of striker Eric Ten Hag wants. Pressing and ball playing striker who can also create and score both. So Harry Kane fits Yeah. that profile. You know, and to be honest, if I now go back and look, the Osimhen guy is brilliant. He scores a lot of goals. But if I don't sign Harry Kane, I think I would rather have Gonçalo Ramos over Victor Osimhen. I've seen Benfica play. I watched because he was linked to United, so I watched him couple of times. Not couple of times, more than twice. His pressing is brilliant. He's good on the ball. His passing, his vision is good. He can also score goals. Mm. He's quick. So I would prefer Ramos over Osimhen because kind of profile Eric Ten Hag wants. Again, Osimhen is really good. He's more of a Cavani striker. Movement on the box is brilliant. He's fast. He's good at dribbling. So again, I won't be upset. But again, नापोली का जो प्रेसिडेंट है वो इसका इटालियन ब्रदर है, डैनियल लिवाई का, डी लॉरेंटेस। भाई ही इज वेरी हार्ड टू नेगोशिएट, very hard to हाँ. negotiate, very hard to negotiate. Well, and I don't feel 130, 150 million का player Victor Osimhen is good player, but not a 130, 150 million player. At the max 100 So million. So yeah, they are mostly going to sell him, and they are also going to the try and sell the the Kawash kash kash Kvaratskhelia. kash 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 कुछ तो ऐसा कैसे What टंग that टूटता Quetta, नाम है उसका। Ilya, Quetta, Ilya. Kvaratskhelia. ऐसे कुछ नाम है ना Quetta, उसका। एम्बापे का Kvaratskhelia. क्या होगा गाइस? You have to say it 3 times. जाएगा Quetta, एम्बापे, रुक जा सीजन Kvaratskhelia. खत्म होने दे। Quetta, रियल Kvaratskhelia. तो नहीं जाएगा? Quetta, एम्बापे रियल जाएगा Kvaratskhelia. रियल मैड्रिड, ना ना ना। रियल ही जाएगा। अगला सीजन दे आर गेटिंग एंड्रिक ना? आई डोंट थिंक दे आर एम्बापे गेटिंग goes Mbappe will go to Real Madrid unless ना। unless unless Sheikh Jassim buys Man United and signs Mbappe. वो So पता है मेरे yeah, को, पता है क्या otherwise I लग रहा think है? Mbappe is going to Real I Madrid. heard That is I for sure. heard They what do you will come call back. ये I not heard basically, ये टीफो का ना, मैंने लास्ट ईयर का एक ये रिपोर्ट देखा था where when Mbappe had like declined Real Madrid's offer ना because of the हाँ. image rights. तो Image उसने बोला rights, था yeah. कि he made this Hmm. initial मतलब basically request stating that अगर आप if you get Haaland into that team then only I'll join Real Madrid. हाँ. नहीं, नहीं नहीं, बकवास है, ऐसा वो नहीं बोला बकवास था था, उसने. इमेज राइट्स का बकवास था। बोला था. ऐसा कुछ हालैंड नहीं का बोला उसने उसने। नहीं बोला था. इमेज राइट्स का उसने बोला था. दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर. हाँ मैंने इमेज वो राइट्स का टीफो वाला तो वीडियो. था। इमेज राइट्स कर सही है भाई, हाँ. सही बात नहीं है। but he हाँ. made हालैंड another का कुछ initial नहीं. request. नहीं इसने he made an initial request to Perez stating that नहीं नहीं भाई, he वो wanted रॉन्ग सोर्स है। Haaland.
Haaland to be recruited in that team. नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं दिस भाई, इज रॉन्ग एम्बापे सोच. का ईगो This was बहुत वो this was कोई बड़ा है. He this was cannot वो before get हाँ. that. Haaland joining City. नहीं भाई, नहीं, नहीं, ये सोच गलत है भाई. not. मुझे तो लगता है बिकॉज ये ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट इमेज राइट्स था. एंड देन बाद में हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस उसके हाथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस वो उसके हाथ जोड़ने लगा, भाई तू जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा. तो बहुत प्रेशर था, फैमिली प्रेशर एंड एवरीथिंग. एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ही साइन. एंड आई थिंक रियल मैड्रिड विल गो बैक दिस समर डेफिनेटली, मुझे लगता है. बिकॉज दे आर लूजिंग एम्बापे, so they're losing Benzema, they're losing a lot of players. उनके बहुत सारे प्लेयर्स ओल्ड हो रहे हैं. So I मेरे think को पता है क्या लग they रहा है, वो will. मैन सिटी पता है इस पे बिड डालेगा, मैन सिटी या फिर पता है न्यूकैसल बिड डालेगा इस पे. इस पे नहीं नहीं नहीं, एम्बापे को. इट इज मैं लिख के देता है. एम्बापे आई विल एम्बापे नहीं. विल कम टू प्रीमियर लीग, मेरे को लग रहा है. No way, I don't think एम्बापे he विल will. ओनली कम टू प्रीमियर लीग इन वन कंडीशन. अगर शेख जासिम अहमद यूनाइटेड को बाय करेगा, इफ द कतारीज बाय यूनाइटेड, देन मे बी इट अ चांस. एंड बाय द वे, एम्बापे इज अ लिवरपूल फैन. ही इज अ Oh, लिवरपूल फैन. और और लिवरपूल के लिवरपूल पास डजंट हैव दे द डोंट मनी हैव टू दैट बाय. क्रेजी मनी टू स्पेंड ना. लिवरपूल के पास तो They पैसा है don't नहीं have उतना. that money. Yeah. दैट क्रेजी. Yeah, he's a Liverpool लिवरपूल fan only. हैड लाइक क्रेजी ओनर्स तो कर देता था ना. Yeah, हाँ, बिल्कुल. Yeah. वही. अभी लिवरपूल को तो नए ओनर्स भी नहीं मिलने वाले, नॉट अनफॉर्चुनेटली. Bernardo, Barca would love to bring Bernardo Silva. However, Goldman Sachs may disagree. नहीं. 27. He's a Man He's a United man. fan. Another trophy for Eric Ten Hag, I guess. Who is a Man United fan? Yeah. एम्बापे बोल रहा है वो. नहीं नहीं, Mbappe to वो Man United. चला था. हाँ, Oh, yeah, I mean, Sheikh I don't know. Jassim Ahmed आएगा तो कुछ हो सकता है, but वो I don't think so. बट Practically मेरे को लग रहा speaking, है पता I है वो think मे बी he will हैविंग go to दैट Real सॉर्ट Madrid. ऑफ कनेक्शन विद द सऊदीज एंड कतारीज ना, तो मेरे को Hmm. दैट्स व्हाई अरे आई थिंक. प्रशांत, मैं तुझे हाँ, पूछना ही भूल गया. आई थिंक यू सॉ ओवर द ट्विटर few days back, and I think Neymar on loan to United. हाँ, Neymar हाँ. is United is the only club नहीं Neymar wants to go. नहीं And if you look at those sources, वो sources काफी decent थे. They were not only random some Spanish नहीं. sources or some local French sources. They were good हाँ. sources. They were No, actually no, good sources. I know they were reliable sources, I think no one of doubt. them was Le Parisien. Le Parisien एक source Yeah, था और एक दो तीन लेपरेशन या yeah, but decent source थे. the point is we लिक्विड पे don't need Neymar. अभी भी दे सकता है. ही कैन गिव यू गाइस लाइक गुड टू सीजंस, बट ही इज नॉट How एट द old is सेम he? लेवल. He's got 30. 31 Neymar का age क्या 31 है? 30, 31, 31. 31 है. 31. Okay. Commercial aspect के हिसाब से maybe we can sign him, but we would rather just sign Harry Kane, who has Premier League He exposure. was, उस हिसाब if you से look मुझे at PSG's last season, out of Messi, Neymar and Mbappe, he was the best last season या in terms of बट goals and creativity. वो बट बहुत यार वो बढ़िया लीग को खिला था. काउंट कर रहे हैं, सच अ जोक यार. लेकिन हाँ, फिर वो भी भी वो है. वो लीग को काउंट करे जो के, लेकिन वो एम्बापे और मेसी से ज्यादा अच्छा खेला था वो लीग में भी. And the other thing तो is कि हाँ, and ऐसा भी नहीं कि PSG have blown the league. They have, they have actually struggled quite a bit this season as well. हम्म They have been या knocked out of the हम्म French Cup. They have not done a domestic double, so that basically means that they have had a hard season. And जितना भी हम लोग French league को बोले, French league and Spanish leagues and even the all the smaller leagues, they are actually somehow still where we have hope because they are still somehow unpredictable. उसमें French league में लोग बोलते इतना, but they still somehow end up having a Lille or a Lens or someone like कोई ऐसा ही मोजो करके कोई नेम होगा, and they would end up winning the league. ऐसा सब होता है लीगा में ऐसा. So there are still surprising teams which are coming through there, which is good. Unlike the Premier League, which is basically going to, it's going to यार वो क्लब का be more and more एक्सिस्टेंस ही कितने one-sided. टाइम पहले था यार. पीएसजी वाज जस्ट फाउंडेड इन 1970. मतलब क्या जोक है यार हाँ, ये 76, क्लब. 1970. 75, 76. 1970 हाँ, क्या क्लब है यार ये सही yeah, में. I know. हाँ, ठीक है, मतलब actually में हमारे they पास don't have it. 5 मिनट है. मतलब हमारे पास 5 मिनट है. तो हाँ, बिफोर वी गो ऑफलाइन, क्विक थॉट्स ऑन कपल ऑफ थिंग्स. बार्सिलोना के बारे में बात कर दिया हमने, द साइनिंग्स. और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाय प्रशांत किम मिंजे, सेंटर बैक टू यूनाइटेड? हाँ, हाँ, हाँ. Napoli का है ना वो, शुड दैट I'm बी? not wrong. हम्म. Yeah, तो क्या लगता है I तुझे? मेरे guess को it would अच्छा be a लगता है. decent signing. मैंने देखा है उसको हाँ, खेलते हुए Asian player है. नापोली का गेम. Asian players इज as I गुड, इज गुड. think they are, हाँ,
Asian players are, improving. They are getting better, and Hmm. they are no longer those under like matlab, they are not no longer to be underestimated, right? Like we just say we Yeah. have Son Heung-min at Tottenham. They are actually able to make a difference now. So that would be a good signing. A South Korean defender, good signing anytime. So वैसी बात है. Hmm. I would actually just like to ask for your opinions with regards to who the Spurs manager will be next season, because that is something which is Hmm. still not, Nagelsmann. confirmed. Nagels- Nagelsmann Nagelsmann, आएगा Nagelsmann. This is going to be but Nagelsmann. Yeah. but he They has. have. I don't. I mean, there is no confirmation as मतलब चेल्सी का कैसे आ गया. Yeah, there तो is no, चेल्सी but को I नागलमैन ने think क्या बोला. initially, Yeah, I they think, will recruit yeah, him because there. Chelsea. Luis See, Enrique. it's not. See, I'll tell you guys one thing. When a manager refuses club, it's not because the club is low. The club Champions League club नहीं है, top club इसलिए नहीं है. It's about the project. And I think Chelsea का हाँ, project, it's थर्ड a क्लास. darkness भाई सामने. तो वो क्या कर रहा है बंदा? He has no उसको clue. ही पता है भाई, वो उसको is ही पता है वो literally क्या playing कर रहा football manager. मुझे लगता हाँ, था कि एड वुडवर्ड इज द वर्स्ट गाय. ये तो भाई एड वुडवर्ड का बाप है ये बाप तो है. भाई. सच्ची में यार. वो एक बंदा पैसा He एग्जैक्टली. खर्च नहीं signed करता, एक players पैसा left, खर्च right and करके भी center. मतलब बर्बाद है. He is just playing हाँ, फुटबॉल मैनेजर यार. मतलब क्या प्लेयर साइन कर रहा है तू? तूने इतनी सब 600 मिलियन स्पेंड किया. यू डोंट हैव स्ट्राइकर. तेरे पास स्ट्राइकर नहीं है अभी भी गोल मारने के लिए. क्या है वो स्ट्राइकर खेल रहा है? मतलब क्या मतलब इसका? तो अगेन काय दैट इज द अभी रीजन. काय there काय was an हावर्ट्स को भी article. निकाल रहे हैं. There was काय हावर्ट्स. there was an article which I saw. मतलब Chelsea because because Chelsea just hired Frank Lampard for nothing. मतलब करने के लिए कर दिया, कोई नहीं चाहिए था, कोई और था नहीं तो. There was actually an article on Daily Mail. Have you read that again by any chance? No, I have I'm not gonna. read that. Acha, हाँ, okay. There is now, like, on the social media, there was actually a proper argument that they are trying to create कि चेल्सी की जो वुमेन्स टीम की कोच है उसको ही रख देते लैम्पार्ड के बदले. मे बी शी वुड हैव गॉटन मोर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड. व्हाट डू यू फील अबाउट इट, you both of you? भाई Any, would you like to comment anything? नहीं, नहीं no यार, नहीं comment, भाई नो नहीं safe नहीं रहना. नहीं. कमेंट. नो नो कमेंट. नहीं, आई थिंक सेब का पता नहीं है हैविंग. वो. अगर उसको रख भी दे ना तो भी चेल्सी अगले दिन उसको सैक कर देगा. हाँ, हाँ, वो बात तो है. हाँ. I या, think हाँ. sacking Thomas Tuchel was the biggest mistake. I think he would have at या, least got them to the Champions League position. But या sacking him again, मतलब and इतना then बुरा नहीं. अरे भाई कितना उन्होंने बुरा खेला यार उन्होंने, कितना गंदा खेला यार, हम्म, कितना घटिया खेला है वो लोग. एक्चुअली सबसे अग्री. बड़ा गलती तो भाई इसका लगता है ये बेचारा पियर एमरिक ओबामेयांग. लैम्प. वो आया ट्यूचल के लिए और ट्यूचल सैक हो गया आते ही एक हफ्ते में. और बार्सिलोना के साथ लीग भी जीत गया वो. बेस्ट पार्ट. हाँ, हाँ. हाँ, एग्जैक्टली. विच मतलब इज क्या वियर्ड. मतलब हुआ. तो बार्सिलोना को देखो एक तरह से तो बेनिफिट भी है, पैसा भी मिला और उसको हम्म. लीग टाइटल फ्री में. हाँ, वो भी है. एंड आई डोंट थिंक उतना कुछ खेला नहीं ना. लाइक ही हैजंट प्लेड मच फॉर बार्सा, हैज ही? अग्री. जस्ट वन और टू गेम उसके बाद. जस्ट 1 or 2 games. हाँ, वही. हाँ, उसके बाद एग्जैक्टली. ही वाज तो सेंट टू चेल्सी ना. हाँ, राइट, राइट, वही. So anyway, too bad. But हाँ, I don't think I'm not sure कि Nagelsmann Spurs आएगा, because Spurs itself is also a hard place to manage. Daniel Levy जैसा मैनेजर है. अगर तू प्रोजेक्ट का बोलता है, if you speak about the project this year, what kind of a project is Spurs right now? You know, they नो are like ट्रॉफी. choker. नो ट्रॉफी प्रोजेक्ट. हाँ, they are like the RCB of the Premier League, right? Of the हाँ, वो लोग football. ऐसे I करेंगे, mean, ऐसे करेंगे. हाँ, it's just see, देखो sheer arrogance है. और Daniel Levy का. I mean, Harry Kane पागल आदमी है doesn't यार want. सही में. Harry Kane doesn't want to stay there. You sell him for 80 million, get that money, sign another player. I mean, it seems that he doesn't want to sell Harry Kane to a Premier League club. He will sell him to Bayern or Real if they want, but he will not send. न्यूकैसल And Harry न्यूकैसल Kane wants मेरे to. को क्यों लग रहा है पता है, न्यूकैसल बिड नहीं मारते उससे. Harry Kane wants to play in the Premier League and win the Premier League. That's what या Harry Kane's priority is, to stay in the Premier League. And I think, but again, he could. अगर अगले साल इस बार बेचा नहीं तो I'm definitely sure कि next season वो free में जाएगा. कहीं पे भी जाएगा, चेल्सी जाएगा, आर्सेनल जाएगा, but he'll definitely leave Spurs. I mean, what kind of, this is why
you don't succeed. This is why तुम भाई जीत नहीं पाते बंदी हो. बना दिया उसको. अगला You sack a manager like Mourinho a day before the final, a week before the final. एग्जैक्टली. अगर Mourinho final खेलता for Spurs, he could have won them that trophy, FA Cup. Yeah, that's true. Someone like Mourinho has got the experience, he knows how to win trophies, and you sack him. Very poor, pathetic. Fair. So Yeah, again, actually, this is not going to take anywhere. But again, looks like it's going to be Nagelsmann. Nagelsmann is all over the news. It's like आज नहीं तो कल वो हो ही मेरे को एक और जाएगा. प्रेडिक्शन देना है. मेरे को एक और प्रेडिक्शन देना है. हाँ. क्या? बोलना मत कि बिग सैम बनेगा. नहीं बिग सैम नहीं. वो सेट करेगा. फिर पता है उसका सक्सेस ये इंटरिम मैनेजर कौन बनेगा? लैम्पार्ड. नहीं नहीं उनका भी वो है ना, वो उनका भी वो है मेसन रायन, क्या ऐसा कुछ नाम है, रायन मेसन ऐसा कुछ नाम है इसका. हाँ जो भी है यार. हाँ वो पहले भी लास्ट ईयर में मोरिनियो वाज सैक तो उसको बनाया था वो लोग ने, तो अभी वैसे ही करेंगे वो लोग. तो वरना वो टीम से रूट वापस आएगा. ठीक है गाइस, वी आर अप हमारा टाइम खत्म हो चुका है. तो थैंक यू गाइस, both of you for joining, and thank you everybody for watching this video. Make sure to subscribe to our channel bottom right hand corner, and we'll be back over the weekend. Interesting games है, end of season है, तो देखते क्या होता है. Good night guys, good night Prashant, good night Agim bhai. We'll see you. Good night. Bye bye. Bye. Ciao. Bye bye.